फील्ड है कौन ना सपोज तुम पाखे गोटे चार्ज अच्छी से चार्ज कौन करे ता चारिपटे जो स्पेस अच्छी से स्पेस टाको मॉडिफाई कर दिए कहीं ना देख सिंपल गोटे एग्जांपल दूसरी सपोज ये किसी ना ये स्पेसटा जमती थी मुझे ये गोटे जिनस रखीदेली गोटे ऑब्जेक्ट को रखीदेवी ता चारिपट स्पेसटा कौन सेयार रही डेफिनेटली किसी ना किसी चेंजेस हम बिकज ये चार्जटा मुझे सी ता स्पेसटा को सराउंडिंग को टिके मॉडिफाई कला से मॉडिफिकेशन टा दो आमको देखा जाऊनी खाली आखिरे बट स्टिल द स्पेस अराउंड ए चार्ज गेट्स modified and that modified space is called your electric field एटा सिना हमें देखि पारुनु बट हमें तार इन्फ्लुएंस को फील कर परिबा केमती सिंपल एग्जांपल हम जानि छे दीटा पॉजिटिव चार्ज परस्पर को अट्रैक्ट करंती सिंपल माय क्वेश्चन इज गोटे पॉजिटिव चार्ज जानिला केमती ता पाखरे आ गोटे पॉजिटिव चार्ज अछि इट इज बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड गोटे पॉजिटिव चार्ज ऑफ फील्ड आउ गोटे पॉजिटिव चार्ज ऑफ फील्ड सहित इंटरैक्ट कला बा आम ताको एमती वेरी सिंपल वे कहि परिबा दे टॉक टू ईच अदर सेति पई आम ताको कहिले जनकर फील्ड आ जनक सहित इंटरैक्ट कला तो सिमिलर नेचर थिबारु से माने परस्पर को रिपेल करे तो दैट इज द नेचर ऑफ योर फील्ड ताले यार डेफिनेशन कोन हला ना इट इज द मॉडिफाइड स्पेस around electric charge is called electric field similarly आमे अलग वेरिएटर फील्ड जानि छे ग्रेविटेशनल फील्ड त माने एठी हम देखले जे कोनसी ऑब्जेक्ट रो बा बॉडी रो जदि किछि चार्ज रहला त सराउंडिंग स्पेस को से मॉडिफाई कला एंड दैट मॉडिफाइड स्पेस को हमें कहबा इलेक्ट्रिक फील्ड एठी गोटे इंटरेस्टिंग थिंग सपोज लेट्स से देयर इज एन ऑब्जेक्ट ए its charge is q गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग मन रख पिला माने प्रत्येक ऑब्जेक्ट जहार किछि चार्ज अछि डेफिनेटली तार किछि मास थिबो बट सेकंड स्टेटमेंट मे नॉट बी ट्रू सेकंड स्टेटमेंट कोन ना जो ऑब्जेक्ट रो मास अछि नॉट नेसेसरीली तार चार्ज थिबो एग्जांपल सपोज गोटे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज हमें जानि छै नेगेटिव तार चार्ज अच्छी तार मास भी अच्छी बट इन द केस ऑफ न्यूट्रॉन रो कौन तार चार्ज है 0 बट तार मास अच्छी ता माने कौन नेसेसरीली जनकर मास थिबो आउ चार्ज थाई पारे न थाई पारे किंतु जहार चार्ज अच्छी तार मास थिबाटा निहाती जरूरी और रहिबो मध्य देन द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग हियर तामाने एयर चार्ज अच्छी तो डेफिनेटली ए ऑब्जेक्ट रो किसी ना किसी मास थिबो सो इट प्रोड्यूसेस टू वेराइटीज ऑफ फील्ड्स साइमल्टेनियसली वन बिकॉज ऑफ द चार्ज दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वन बिकॉज ऑफ द मास दैट इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड मन रख अच्छा देन जने क्वेश्चन पचारिबो जे यार ए फील्ड रो एक्सटेंशन केते बाट पर्यंत गोटे चार्ज फील्ड प्रोड्यूस कर परियो theoretically meaning it extends up to infinite but actually depends on the strength of the charge and the distance at which its influence is being considered usually the charge magnitude बहुत अधिक होला ताले distance अधिक दूर पर्यंत से influence कर परिबो यदि कम रहिला ताले से कम distance पर्यंत कम कर परिबो ना influence कर परिबो आम डे टू डे लाइफ रे जो चार्ज सहित आम लिंक आसुचु तार इन्फ्लुएंस बहुत कम डिस्टेंस पर्यंत काम कर ताने सिंपल वे हम कहले द मॉडिफाइड स्पेस अराउंड द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एई हमें अगेन क्वेश्चन पचारि परिबा मॉडिफिकेशन जदी हैला तले से कहा ऊपर डिपेंड करे मॉडिफिकेशन यूजुअली तीनटा फैक्टर ऊपर डिपेंड करे कौन ना हम जो चार्ज नहीं थी से चार्ज का मैग्नीट्यूड ऊपर क्यू ऊपर डिपेंड करे ए चार्ज टा को मीडियम रे अछि ता ऊपर डिपेंड करे थर्ड पॉइंट धर हम ए पॉइंट रे मॉडिफिकेशन जानि हो चाहू ता माने ए चार्ज डिस्टेंस भीतर जानिबा को डिस्टेंस ऊपर डिपेंड करे ताले हम तीनटा जिंस देखिले कोन
na magnitude of the charge that produces the field, the medium in which this charge is kept, and the point at which its influence is felt. ये तीनटा पॉइंट पर फील्ड मॉडिफिकेशन डिपेंड करे। तामाने यार इन्फ्लुएंस टा या डिस्टेंस कथा काहे कि हमें कहले बिकॉज़ या ठरू जदि हमें दूरे दूरे जीवा ताले यार इन्फ्लुएंस टा ग्रेजुअली कमी कमी जाए। ताले फील्ड रो मॉडिफिकेशन टा बा केते एक्सटेंट पर्यंत गोटे चार्ज तार स्पेस को मॉडिफाई करछि ताकू जानिबा पई हेले हमको गोटे टर्म जानिया को पड़िबो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। मन रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज लिंक्ड विद electric field. Electric field strength, it is denoted by a symbol E and it is a vector quantity. Electric field strength. Strength word रो जणा पड़छि मीनिंग कोन हेतिबो ता माने जो चार्ज ता फील्ड प्रोड्यूस करूछि Q, let's say that charge, तारो strength of the field हमें जानिबो को चाहूछु। Suppose ए पॉइंट रे मु तार स्ट्रेंथ जानिया को चाहूछि। चार्ज Q पॉइंट ए रे अछि, पॉइंट B रे मु तार स्ट्रेंथ जानिबा को चाहूछि। ए ठारू B रो डिस्टेंस होछि लेट्स से R। ए चार्ज ताकू कुहाजिबो सोर्स चार्ज काहेकि ना से कोन करे ना ता स्पेस ता को मॉडिफाई करे आ से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करछि। ए पॉइंट रे आरो स्ट्रेंथ जाने को चाहूजे कार स्ट्रेंथ ना फील्ड रो स्ट्रेंथ ताहले कोन करा जाए ना ए पॉइंट रे हमकु आउ गोटे चार्ज नबा पड़िबो Q0 तमने आर स्ट्रेंथ जानिया पई आउ गोटे चार्ज नबा पड़िबो आ ए चार्ज ता को हमें कहिबा टेस्ट चार्ज। कोन कहबा टेस्ट चार्ज काहे आ ए चार्ज ता को नै कि हम तार स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करबा। टेस्ट चार्ज हमें मन चाहते गोटे चार्ज को टेस्ट चार्ज नहीं परिबा। कन्वेंशन अछि, कन्वेंशन अनुसार दिस टेस्ट चार्ज इज टेकन टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। सेकंड थिंग इज द वैल्यू ऑफ दिस magnitude is unity 1, and the third qualification of the test charge is it must be very very small, small in comparison to capital Q। माने Q0 रो वैल्यू Q कंपैरिजन रे बहुत छोटो हेथिबो। एटा तो कन्वेंशन आ मात्र किछ नाही बिकॉज़ ऑलरेडी इट वाज टेकन सेते पे हमें नेचु यूनिट नेले हमको कैलकुलेट करिया पे स्ट्रेंथ ता इजी हो। स्मॉल एथि पे हमें नो बिकॉज़ एथि पे ना देखो Q से भी निजर फील्ड प्रोड्यूस करथिबो, निजर फील्ड से प्रोड्यूस करछि। Q0 जते छोटो होले भी से भी निजर फील्ड प्रोड्यूस करिवो। मन रखो आमे ए पॉइंट रे जो स्ट्रेंथ बाहर करूछु that is because of this source charge, that is because of this source charge only। किंतु टिके लॉजिकली भावो जे Q0 निजे भी फील्ड प्रोड्यूस करथिबो, सी भी ता स्पेस रो मॉडिफिकेशन भी करउथिबो, से कोन करथिबो आर फील्ड सहित इंटरेक्शन करी मॉडिफाई कर दबो स्पेस को आवरी। ता माने हम जदि एटा को बहुत छोटो नबा Q0 टाको यदि हमें बहुत छोट नबा ताहले से आर फील्ड को बेसी चेंज कर परिबो नाही। ताले हमें जहां भी ए पॉइंट स्ट्रेंथ देखिबा ओनली बिकॉज़ ऑफ दिस Q। ताले एटा हला हमर प्रोसेस स्ट्रेंथ ता जानिया पई प्रोसेस। ताले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रो डेफिनेशन होची मन रखो हमें कोन कले प्रथमे मु गोटे सोर्स चार्ज नेली, गोटे टेस्ट चार्ज नेली किछि डिस्टेंस। एटा हला टेस्ट चार्ज रो क्वालिफिकेशन बुझिला। सोर्स चार्ज ता पॉजिटिव है पर नेगेटिव है पर बट टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव रिमेंबर। ताला हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ केमती ए पॉइंट रे बाहर करबा द डेफिनेशन इज ए पॉइंट बी रे Q0 केते अमाउंट रो फोर्स निजे फील करूची बुझिला। जेति की अमाउंट ऑफ फोर्स दिस Q0 is experiencing, that amount of force
is nothing but the electric field strength at point B because of the charge Q, capital Q. It means I can say here it is nothing but the force experienced by this test charge at this point because of this capital Q or because of this source charge. Suppose that Q naught is feeling a force F Q naught Q. Last class में पढ़ते थे Q naught Q माने force on Q naught by Q. So this is nothing but your electric field strength at B. Force, as it is a vector quantity, electric field must be a vector quantity. बुझिएला ताले E is nothing but this, provided Q naught should be unity. ताले logically यदि unity न है तो ताले कौन हो ना हमें unitary method में बुझी करिबा. Suppose Q naught is experiencing a force if Q naught Q amount. ताले unit charge टे केते amount of force feel करिबो, that is F Q naught Q by Q naught. This quantity will be your electric field strength. Mukale magnitude ta likhi. Remember, this Q naught should be very small. So this is the formula for your electric field strength. Buchhiera, direction. The most important thing here it is direction of electric field. It is very simple. Ame कहले Q naught upare जेतिकी फोर्स पडुची सेटा ला इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रो मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन हला ए फोर्स रो डायरेक्शन जुआडे पडिबो ताले इट इज वेरी सिंपल. दिस टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव. दिस Q may be positive, may be negative. ताले सपोज this Q is, let's say it is positive charge, let's say plus Q. ताले जदी ए पॉइंट रे आमे गोटे टेस्ट चार्ज ने जदी Q नॉट टा 80 रखिले Q टा 80 रखिले ताले आमे कहूचे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रो डायरेक्शन कोड ना फोर्स रो डायरेक्शन को फोर्स ना जो फोर्स टा Q नॉट ऊपर पडुची. देखो ये पॉजिटिव ताले कोन हबो, दिस पॉजिटिव विल रिपेल दिस Q नॉट. ताले हमर फोर्स रो डायरेक्शन अनुसार आमे जदी ए दुटा चार्ज को जॉइन कर दबा, this charge will repel this charge, means direction will be our way. तमाने A point रे positive charge पाई field और direction हैला our way. जदि ये negative charge इथंता, तमाने if this charge will be minus Q, then at this point the direction of the force will be towards, because it is negative, this is all the time positive. So गोटे नेगेटिव चार्ज गोटे पॉजिटिव चार्ज को निज आटे टाणी ता माने इलेक्ट्रिक फील्ड गोटे नेगेटिव चार्ज पाई ता आडे जाए और पॉजिटिव चार्ज थरो इलेक्ट्रिक फील्ड ता दूर को जाए. दिस इज अ वेरी सिंपल कांसेप्ट. एटा को मने रख. एंड हियर वी कैन गेट अ फार्मूला फॉर अ पॉइंट चार्ज टू. केमती ना सपोज ये हला गोटे पॉइंट चार्ज ताले ए फोर्स रो वैल्यू हमें पाई दे परिबा. The value of this force we can calculate. See, if Q naught Q, if Q naught Q will be, यदि free space रे रहले ताले एटा हला 1 by 4 pi epsilon naught Q naught by R square. ये value रानी एटी पके दवा. If you put this value over here exactly at this point, then we are going to get E is equal to F Q naught Q by Q naught, which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q naught by R square divided by Q naught. So Q naught got cancelled. So which implies E will be 1 by 4 pi epsilon naught capital Q by R square.